events. We at Ruparel Realty are very pleased that we are getting associated with Falguni Ben for the cultural festival of Navratri. Navratri is our tradition, and she being the queen of Navratri, it's great pleasure to have her association with us. I will now request Ms. Falguni to say a few words. Welcome you all. And thank you Amit bhai for trusting in us. And I hope कि इस साल बहुत मज़ा आएगा हमें भी और सबको भी. Thank you. Still. Amit bhai will now be giving a small token of appreciation to Falguni. अरे अंकल एक जगह बैठो ना. स्टील थोड़ा नीचे. स्टील रुपेश पीछे आ. Excuse me. Where's standing? Mr. Amit bhai to say a few words on the event. When is it going to take place? Which ground details? Something if you can say. The event is starting from 21st of September, and we are hosting it at Borivali. Okay, Mr. Rajesh Khattar, his company Whitespan, and Mr. Santosh, they together are organizing the event. So the ground, I think, is the Mavinagar ground. Yeah. Rajesh, would you like to say a few words on the event? Good afternoon, everyone. To begin with, I would say the very first thing that we're extremely pleased to be associated with Falguni ji. And this is, I think, a first kind of an amalgamated corporate association with her Navratri. एक बहुत अच्छी बात ये है, फाल्गुनी जी के साथ एक दो बार मुलाकात जब हुई सबसे पहले, कि she doesn't treat this as an event. This is more like a puja for her. And यही sentiment लेकर के इस पूरी event को आगे बढ़ा रहे हैं. संतोष जी, शोबिस साथ में हम सब मिल करके एक अलग experience totally देना चाहते हैं जितनी भी audience है फाल्गुनी जी की. And I'm sure that सारे efforts, when we put them together, we will come out with a very different experience for the audience this time. Thank you. I would now like to open the stage for any questions from the media. फाल्गुनी जी, क्या नया देखने मिलेगा आपकी तरफ से इस बार? What songs will you get to see this time around? What have you planned? ज़्यादा करके नवरात्रि फेस्टिवल में हम लोग माता जी के गरबे ज़्यादा गाते हैं, तो इस साल भी बहुत सारे नए हम लोग गुजराती गरबे, गुजराती फोक सॉन्ग्स, प्लस जैसे कि हमारी बहुत सी ऑडियंस नॉन गुजराती भी होती है, तो उनके लिए कुछ राजस्थानी गाने, कुछ मेरे एल्बम्स के गाने, और इस साल मैंने एक गाना नया स्पेशली नवरात्रि के लिए लॉन्च किया है, वो भी हम गाएंगे. कुछ मराठी गाने जो हर साल हम लोग गाते हैं, पंजाबी गाने. जी, इस साल
अभी जस्ट लास्ट वीक ही मैंने अपना नया गाना लॉन्च किया है जो गुजराती है, जिसका टाइटल है जोड़े रहो राज, जो स्पेशली नवरात्र को ध्यान में रख के हमने ये गाना बनाया है। कुछ अलग तरीके से कुछ नया करने की कोशिश की है, तो लोगों ने काफ़ी अभी तक पसंद भी किया है। Amit, nice to see you associating with Falguni, but why did it take so long for you to build up this association? I don't think it's long. Okay. We have, it's like just 1 month, the event is still 1 month away, and we had finalized this 2-3 months back. We just announced it now. And you were trying it for 3 years, but I couldn't get a date. Yeah, that's what I meant, because last time when I interviewed her, it was someone else. Yeah. So the idea is that we were at it for a while. It just materialized now. In terms of arrangements, what new can we get to see from your end? You know, in terms of arranging the See, scale it of will be the arrangement. best experience till now. That's what I can say. We are trying to bring a more professionalism in this. Everything will be more well managed and more organized and completely different experience for people. And to begin with, the venue itself is new. Falguni will be performing for the first time on that venue. So the locality, Kandivali, Borivali. Yes, Borivali, yeah. Borivali. So starting from there on, the idea is, endeavor is to make it a very different experience. And I'm sure with the entire team around, we'll definitely succeed. फाल्गुनी जी, एक दो लाइन हमें सुनने मिलेगा आपके कोई नए एल्बम से पॉसिबल? आई थिंक मुझे सवाल पूछने की आप बदले आप गाना गाने को बोलिए तो मैं गा दूंगी। सवाल सब इन सब से ही पूछिए। फाल्गुनी मैम, सेम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड आल्सो कि आपका जो परिगु में वो जो सॉन्ग है जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। Well, it's a company which I started almost 5 years earlier, 6 years earlier. We are kind of brand directors with Rooper Rail. But we've been closely associated with a few developers, and primarily we are into brand promotions. And we work very closely with all the clients. Now, like Rooper Rail is like a family to me. And we have been getting the talent on board, like we've got big stars like Kareena Kapoor, Anushka Sharma on board for Rooper Rail has been brought in by our company, Shraddha Kapoor, Bachchan Saab. So we bring the talent on board and we produce as well for them. And the idea is to have the journey together. When you create a brand and when you establish a brand. So we work in tandem with the company, understanding their needs, and then we steer it accordingly. Any Bollywood celebs that you are planning to open for special appearances this time? I think organically many of them are going to come. फाल्गुनी जी का प्लेटफॉर्म है, कौन छोड़ता है? तो फाल्गुनी जी उनको मालूम है कि फाल्गुनी जी के पास जो ऑडियंस आती है, स्टार्स जो हैं खुद ब खुद चले आते हैं वहाँ पे। किसको एक्सपेक्ट कर रही है आप इस टाइम? आई थिंक 6-7 फिल्में उस टाइम पे आ रही हैं, तो वी आर होपिंग एंड वी आर थिंकिंग दैट टीम्स विल विजिट इंक्लूडिंग द स्टार्स. Your son is an upcoming star. Will he make a special appearance? Well, his film is in a different space and zone altogether. So, the promotions are not starting at this moment. But this is a great occasion to start the promotions, right? Yes, great occasion. Yes, I'm sure वो आशीर्वाद देने इनका जरूर आएंगे. लेकिन promotions की strategy जो है, we should leave that to the producers. You know, what I feel the biggest benefit is for the audience, because it's a much better organized kind of an affair. Then there are themes which are put in, and the experience becomes different altogether. Why? Because everything is integrated. When you have fragmented people trying to do one event, it happens well, but it doesn't have that kind of an impact as there is one solid hand behind and there is a single thought on which everybody is working. Do you have some plans for organizing events apart from India, outside India? Sorry? Do you have any plans organizing events outside India?
Yes, of course we do. Right now we're very busy with India. But if the opportunity comes, why not? Yes, of course, outside India as well. Amit ji, how do you think GST has taken a toll? Do you think it will take a toll on Dandiya as well? Let's leave it that for some other occasion. That's a different press conference altogether. फाल्गुनी जी, आप म्यूजिक वीडियोस में भी वापस आ रही है, कुछ उसके बारे में बताइए. व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस विल दैट बी? मैंने भी जैसे बताया वैसे जस्ट लॉन्च किया है यूट्यूब पे सॉन्ग मेरा, एक गुजराती सॉन्ग है जो काफ़ी नॉन गुजरातीज भी पसंद कर रहे हैं. आई एम हैप्पी अबाउट इट, जिसका टाइटल है जोड़े रे जो राज. एक दो लाइन हो सकता है वो सॉन्ग से? क्यों नहीं. What's your own idea of music when it was back and since? सी म्यूज़िक अभी जैसे आपने हनी सिंह बोला, हनी सिंह अभी आई थिंक जुना हो गया है. अभी काफ़ी मतलब एवरी डे एवरी वीक द म्यूज़िक इज़ चेंजिंग, उसका मतलब स्टाइल. लेकिन ऑफ कोर्स मैं सुनती हूँ गाने, कोई कोई गाने पसंद भी करती हूँ. लेकिन जहाँ तक हमारे फेस्टिवल का नवरात्रि का जहाँ सवाल आता है तो वी स्टिक टू आवर ट्रेडिशंस, वी ट्राई टू. और ऑफ कोर्स हम लोग भी हिंदी गाने गाते हैं, पंजाबी गाने गाते हैं, लेकिन वो एक लिमिट में. फाल्गुनी में मारो तो हमने एक सवाल है. रिसेंटली तो मैं मुद्दे साथ एक प्रोग्राम કર્યો હતો તો એવા કોઈ પ્રોગ્રામ તમે રાખવાના છો હવે રાઈટ નાઉ, અને એમાં જે આપણા ગુજરાતી કલ્ચર કહેવાય છે સ્પેશિયલી આમાં જે એક આપણું જે હતું મન મોત બની ધન ગાટ કરે, એવા તો ઘણા બધા ગુજરાતી સોંગ છે જે લોકો આજે કે ગાતા ફેમસ હતા. તો આ ગરબામાં એક જણ જોવા મળશે. मोरबनी थनघाट आई थिंक लास्ट ईयर तो बहुत हमने गाया था. एवरी मतलब वेरी पॉपुलर सॉन्ग. फिर लास्ट टाइम में एक पेલું બી સોંગ આવ્યું હતું, એ બી ઘણું જૂનું સોંગ છે પણ કોઈ ગાતું નહોતું, પણ અમે લાસ્ટ ટાઈમ ઇટ્સ કોલ્ડ મને માવતર મળે તો મારી અંબા જેવા મળે જો, એ બી લોકોને બહુ ગમ્યું હતું એ સોંગ. અને તમે જેમ કીધું એમ થેન્ક્સ ટુ મિડ ડે કે એમણે આ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો, અને એવા પ્રોગ્રામ અમે કરીએ છીએ. પણ કોને અમે વધારે કરીને મંદિરમાં, હવેલીમાં એવી રીતે ભજનના પ્રોગ્રામ કરીએ. પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે આટલા મોટા બેસ, આટલા મોટા પાયે અમે ષણમુખ આનંદમાં પ્રોગ્રામ કર્યો, એમાં સારી સક્સેસ પણ મળી, અને આગળ પણ એવો ચાન્સ મળે તો પ્રોગ્રામ અમે જરૂર કરતા રહીશું. संतोष जी, कलर्स गुजराती पे. यस. Falguni ji, Bollywood has been missing you for long. Recently, Shah Rukh Khan said that he wanted you to sing "Udi Udi Jaye" from Rais. तो शायद उनको कांटेक्ट नहीं मिला होगा मेरा, क्या मालूम. आई मीन वैसा ही हो सकता है. अच्छा. आई वुड लव टू, अगर ऐसा चांस मिलता है तो आई वुड मिस इट. और आपने तो टूर वूर भी किया था ना उनके साथ, वो तो 90s काफ़ी पहले. तो कांटेक्ट तो जब रंगीले दिलवाले, मतलब उस दिलवाले दुल्हनिया जब रिलीज हुई थी तो भी काफ़ी सारे टूर्स अपने साथ में किए थे. गॉड्स विश अल्टीमेट, फिर तो वही है. Any more questions? Okay, before we end, I would like to thank our television partner, Colors Gujarati, our radio partner, Radio Mirchi, as well as our outdoor partner, Bright Outdoor Media Private Limited. And thank you all for being here today. I would like to thank the media also for being here today, and I would like to invite you for lunch. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार ये हमारा 24वां साल है मेरा और मेरे ग्रुप ताथैया के साथ नवरात्रि का. और आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद अमित जी, रूपा रेल बिल्डर्स.
मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी आएंगे, जो लोग देखेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। जी आपसे जानना चाहेंगे कि एसोसिएशन के बारे में बताइए, किस तरीके से ये सब आइडिया है? नवरात्रि हमारा ट्रेडिशन है, गुजराती ट्रेडिशन है। एंड कांदीवली, बोरीवली एक ऐसा कैचमेंट एरिया है जहाँ गुजराती पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड फाल्गुनी बेन, हर नेम इज़ एट द टॉप. If there are 1 to 10 people in the ranking for Navratri, she is number 1 and there is nobody behind her. So we are greatly pleased to get association of her and honored that she has agreed to be our, association for Navratri to celebrate and the puja of Mata Ji basically. पूरी फाल्गुनी जी आपसे जानना चाहेंगे क्या-क्या तैयारी है इस बार की, क्या-क्या दिखने वाली है? बहुत सारे गुजराती गाने, फोक बेस्ड गाने, कुछ राजस्थानी गाने, कुछ मेरे नए एल्बम के गाने जो इस साल रिलीज़ किया है मैंने, और कुछ जो भी हिंदी फिल्म के गाने, कुछ नए जो हम लोग उसमें ले सकते हैं, उस तरह के गाने। ऐसा कोई फेवरेट गाना जो आपको बार बार गाने का मन करता है स्टेज पर? एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं। एक जैसा अभी मैंने गाया था परी हूँ मैं, फिर गुजराती गाना है खेल खेल रे भवानी माँ, केसरियो रंग, ऐसे बहुत से गाने हैं। ओके, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि आपने गाना लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी तरफ से और क्या आने वाला है? अभी जस्ट लास्ट वीक ही, कुछ हार्डली 8-9 दिन हुए मैंने रिलीज़ किया वो गाना, और मे बी ड्यूरिंग नवरात्रि और ड्यूरिंग दिवाली आई विल रिलीज ऑन वो सॉन्ग। ओके, इसके अलावा और क्या हम बॉलीवुड में भी कुछ काम कर रहे हैं? बॉलीवुड में अगर मुझे चांस मिलता है अच्छा तो क्यों नहीं। थैंक यू।